नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ इला पचौरी, चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर मदरहुड क्लब, and in our wealth series we bring to you today a wonderful, most inspirational woman, Mrs. Madhu Sehgal. And let's wait for others to join before we start talking to Mrs. Madhu Sehgal. And actually मुझे आज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा कि मैं आपको मिसेस सहगल बोलूंगी इंस्टेड ऑफ आंटी। आई होप यू डोंट माइंड। Please. Although it's odd for me, but we have to maintain the decorum of our show. And so let me introduce Mrs. Madhu Sehgal to all of you. Mrs. Madhu Sehgal is a Fauzi wife. She married an army man. She gave birth to two beautiful children. She has been a teacher all through her life, and she is still teaching small kids from humble backgrounds. She is the most inspirational woman I have ever come across. आपका बहुत बहुत स्वागत है मिसेस मधु सहगल शो पर। मदरहुड क्लब पर आप पहली बार आई हैं और एक मैं आपकी इंट्रोडक्शन और दे दूं कि वैसे आपकी अपनी शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन आप मदरहुड क्लब की फाउंडर एकता सहगल मल्होत्रा की मम्मी हैं, तो दिस मेक्स इट ऑल द मोर इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट कि आज हम आपसे जाने कि आपकी जर्नी बतौर माँ कैसी थी। आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर हम बात स्टार्ट करेंगे जी। Thank you, Ila. Thank you so much for calling me, to share my motherhood journey and the Motherhood Club. I'm really thankful to all the members and all the jury that you have called me and honored me. मैं तो एक बहुत सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ and I am born and brought up in Punjab. Okay. I don't know whether you people, though it has become very famous nowadays, because in most of the movies, in the shows, this name is coming quite often. Batinda. Batinda, So yes. I am from Batinda. I'm from Batinda, and from a very, very big family and joint family. My Okay. father and six my aunts, we were all together in one house till my marriage. I got married in 73. So till 73, it was a joint family. One kitchen, everyone together. And it was a lovely, staying with all together with all the cousins. मतलब अभी भी हम उन चीज़ों को इतना याद करते हैं एंड व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग लगता है अभी तो ये कल की बात थी एंड वी वर वेरी क्लोज निट फैमिली एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था और हमें कभी बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी बिकॉज वी वर 8 to 10 ऑफ कजन्स ऑफ ऑलमोस्ट 2-3 साल के एज डिफरेंस में एंड वी यूज्ड टू जस्ट हैव फन इन द हाउस ओनली. So I will not say that my parental family was a conservative family, but at the same time, as per the place, we were the most, modern people. But still, as per the place, we used to keep that, thing in our mind. जैसे कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष. So accordingly, we have been brought up. But we never felt that we are at small place. Or we got all the facilities from parents going out, but under protection, not all alone. So that has its own fun. We never missed कि हमें बाहर अकेले नहीं जाने देते हैं, क्यों नहीं जाने देते हैं, because we had very loving bond with each other, with all the cousins. चाहे 2-3 साल का फर्क था पर लगता था कि हम सब एक बराबर हैं. So I had lovely childhood, very sweet memories. एक खूबसूरत बचपन जो कि एक जॉइंट फैमिली में आप पले बढ़े, वो यादें आप आज भी संजोकर अपने दिल में चलती हैं. और जो आप कहते हैं कि आपका जो उस टाइम पे आप बहुत मॉडर्न हिसाब से रहती थी, वो आपकी पर्सनालिटी में आज भी झलकता है. तो वो शिफ्ट कैसा रहा जब आप एक जॉइंट फैमिली से, एक सिविलियन जॉइंट फैमिली से, एक आप
आर्मी वाले की वाइफ बनी, एक आर्मी मैन की वाइफ बनी। वो वो शिफ्ट मेरी कैसा अपनी रहा? वो मेरी अपनी चॉइस थी. जी। I was very keen that I must marry to a Fauji. ओ। And many times, one or two proposal came, which through my sister I conveyed to my parents. I would like to marry to an army officer. And one, my elder sister's husband, I was very friendly with him, so I told him also, since he having the same army background, so he started looking a match for me, and he found, and I got married to an army officer. So that was my own choice, and which was really fulfilled. क्या मुश्किल था एक भरे पूरे परिवार से एक न्यूक्लियर फैमिली में जाना, या वहां पे भी आप शुरू में एक जॉइंट फैमिली में गए? एक्चुअली मुश्किल तो को आसान बनाना तो अपने हाथ में है. यू क्या सी, बात है। अगर मुश्किलें तो चैलेंजेस तो आती हैं, बिकॉज जहाँ लाइफ है वहाँ चैलेंजेस तो हैं ही हैं. जी जी। तो उनको कैसे पार करना है, उनके साथ कुछ समझौते करने पड़ते हैं, कुछ मानने पड़ते हैं, कुछ प्यार से होते हैं. तो वो तो चलते रहते हैं. तो तो सिंस वी वर फ्रॉम द जॉइंट फैमिली, तो वो एक एक्सेप्टेंस थी कि हर चीज को एक्सेप्ट करना है. हाँ। So there, I didn't find any, difficulty to from a big family to a small family. But in the beginning, when I got married in 73, May 73, and I hardly stayed with Narendra because he was posted at Meerut and there was no family accommodation. So ओके। he used to come to Delhi. I was with my brother-in-law. My brother-in-law that time he was a chief security officer to President Vivi Giri. So they were in the president's house, ओके। and you feel very good that my wedding, one of the function also took place in President House, swimming pool. My wedding reception was there, so I was so lucky. So he used to come every weekend. शाम को आते थे सैटरडे को, और सैटरडे संडे मंडे मॉर्निंग he used to go back because there was no accommodation, family accommodation. ओके। So I stayed like that only in the beginning for 2 3 months, and then he got his field posting. So he went to field. Then I was with my mother-in-law at Panipat, ओके। started staying with her. So that time was little challenging time because me, my sister-in-law, and my mother-in-law, three females in in a house stayed all together. So that was a little challenging because shuru mein you feel that your husband is with you, he could guide you, about everyone. But then I was left into the water to swim on my own. But I had very nice time. ये जो My आपकी बात है, आपने अभी कही कि मुश्किलों को आसान बनाना हमारे हाथ में है, तो ये आज के शो का आपकी तरफ से पहला बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, इस वक्त हमें कम से कम 10 गेस्ट बाहर से देख रहे हैं, एंड आई वेलकम ईच एंड एवरीवन हु हैज जॉइंड टू वॉच दिस शो टुडे। एंड आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आने भी लगे हैं, और अनीता मिश्रा कह रही हैं कि वो आज भी उनका जो मायका है उसमें 80 लोग हैदराबाद में एक ही छत के नीचे रहते हैं। Oh, so nice. सो इन टुडेज टाइम ऐसी बातें देखना सुनना थोड़ा मुश्किल लगता है, और इट इज टोटली इनक्रेडिबल। एंड आई थिंक एक जो आपने एक और बात बोली कि जॉइंट फैमिली में आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है, you accept everything that comes your way, you accept the people around you, and you accept the situations, and at the same time you also learn to make a way around those situations. Yeah, because you see, there were six female from a different family they joined. So Yeah. seeing their temperament, seeing their behavior, my mom, she was the eldest, and we found that whosoever joined, कहते हैं ना एक से बढ़कर एक, घर में आए. So seeing जी। those bonding, seeing those respect to each other, it was really something very, in a very younger age we learned all these things. Yeah. So that is how I didn't find any problem to adjust, anywhere and everywhere.
So we'd like to now learn, when did you become a mother to your firstborn? As I told you, he immediately after marriage he went to field area. Yeah. So I was all left, by myself. At times तो 10-10 12-12 दिन तक बात भी नहीं होती थी. उन दिनों मोबाइल तो होते नहीं थे. और कभी आवाज भी अगर कहीं से बात बूथ से जाके फोन भी करना, आवाज नहीं आती थी बिकॉज ही वॉज इन 14,000 feet height. Okay. So the communication was a थोड़ा प्रॉब्लम थी. चैलेंज था बट वही जी. है. सो कहते हैं ना व्हेन गोइंग गेट टफर यू बिकम स्ट्रॉन्गर. सो धीरे 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 थोड़ा समझ भी आनी शुरू हो गई. एंड एवरी फौजी, if the wife gives support, then they have become more stronger. They are always strong, but they themselves become strong and they make wives also stronger. Yes. So many times I had problems. I remember when he came in March, so he told me, so since you are all left by yourself, I think we should have a baby. So, heart of heart, I also felt yes, at least I'll have a toy to play with in his Okay. absence. So, and you will be surprised, I got married in May, which was Mother's Day month. Okay. My first baby's news was in May, in fact, a day after Mother's Day. Wonderful. And uh, after a year and a half, I become a mother. I give birth to my son, who's my eldest child, Anuj Sehgal. He was born 74 December, Okay. and जी जी बताइए. yeah, हाँ. he was born 74th December, and surprisingly, he came to Batinda because I was with my parents, and he came 10 days before. कि okay, I'll be with her just a support. And doctor said कि अभी time है, you can have a visit to your mother. So he went back to Panipat to his mother because his mother was also staying alone. So he left on 20th, 19th evening, and 21st Anuj was born. So he Okay. was born in his absence only, which I really, it was my desire that he should have been there. But whatever, happens, it happens. So it was Yes. normal delivery. And the 21st evening, he again came back to Batinda. So that, having a first baby, it was a very different feeling. When I see the baby, I couldn't believe that I had given birth to him. And it was really very, very lovely feeling. So then he again went back to field to brought him up, to my son to brought him up was very challenging because I was all by myself. So lot many Yes. problems came in between. I remember once I was going to Batinda and I was traveling by bus because there was no male member in the family at my in-law side. Yeah. So I was going all by myself with my son. We were in the bus, and the bus just got stuck with some big stone. So I was at the back seat, and back seat का दरवाजा खुल गया. Hmm. Me and my son both were thrown out of the that door, Oh my God. and everybody got panic कि क्या हो गया, कैसे मिलेंगे दोनों. But भगवान की दया से I was also all right. Anuj was also all right. So we were again back to bus. Again bus started. Then after about 5-6 station, बस का टायर पंक्चर हो गया. Again, बैठे हैं कब बस का टायर ठीक होगा करते करते at night 11 o'clock I reached to my parents' place. And when they opened the door, the moment they opened the door, I started, crying. Crying. They got very worried कि क्या हो गया.
पेरेंट्स को होता है कि ससुराल से आई है, बेबी को लेके आई है, तो होप एवरीथिंग इज ऑल राइट. So then I told them the whole story. This is what it happened on the way. But thank God, when end is well, then everything is well. So there are many stories. In fact, if I start telling and sharing all the stories, I think you need uh, बहुत Lot लंबा many time to do that. sessions, Yes, yes. lot many, lot many. When did So Ekta arrive? Ekta's and Anuj's difference is 4 years. 4 years. Okay. Yes, Ekta's time also, she's gifted by Vaishno Devi, because when I was expecting, I went to Vaishno Devi, the whole family, and I said that now I want a girl. And because I have already son, and now I want a girl, please, my wish should be fulfilled. And I got the Ekta, and because I was thankful to Durga Mata कि मेरी विश अब मैं पूरी हो ऑन गई. अ लाइटर नोट ऑन अ लाइटर हाँ, नोट मैं एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपसे। पूछे. अनुज को मैंने देखा नहीं है, थोड़ा सुना है उनके बारे में, लेकिन एकता को मैं इनसाइड आउट जानती हूँ। जो आपने एक पावर हाउस पैदा किया, क्या खा के पैदा किया था, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। अनुज के टाइम मैंने गीता बहुत पढ़ी. जी, Every day till 9 months, I used to read Gita every day. ओके, और एकता के टाइम पे I went to Vaishno Devi. So all the time I just prayed Vaishno Devi that कंजका आनी चाहिए. जी। तो So वही these two were the आपके घर तो powerhouse. साक्षात एक्चुअली देवी आई है, बिकॉज़ एकता जो है ना, वो 8 हाथ लेके चलती हैं। शी इज सो गिविंग इन नेचर, शी एक्चुअली शी थिंक्स अबाउट एवरीवन। तो ऐसे वो पेरेंट्स जैसे होते हैं, बच्चे वैसे ही होते हैं। तो डेफिनेटली लीडरशिप क्वालिटीज आपने उसको दी हैं। तो आप जब एकता हुई थी तब आप सर के साथ रहने लगे थे या तब भी आप? हाँ, I was with Narendra only. We were together. In fact, Ekta's time throughout we were together. ओके, And uh, when you are together, then the things are different. Anuj यस। time, all the time I was with my parents. So both time there were the different feelings, and the impact also different. So both are different personality. अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, बच्चों को जब आप बड़ा कर रही थी, तो आप उनको एक आर्मी के एटमॉस्फेयर में बड़ा कर रही थी, जहाँ पे डिसिप्लिन होता है, एडजस्टमेंट्स होते हैं। और उनको जब आप अपने पेरेंट्स को या और सिविलियंस को जब विजिट करती होंगी, जैसे समर हॉलीडेज में, या तो उस टाइम बच्चे क्या ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली मोल्ड हो जाते थे उस एटमॉस्फेयर में, या आपने उस पर कुछ काम किया? नहीं, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम. ओके, They were like that because every summer vacation, 2 months, they used to be at Nani's house. All the sisters, everybody, we used to be together in Nani's house, and they used to be big hangama, and they never, found any problem because you see that makes a difference because every 2 years आर्मी में आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते रहते हो. जी, विद द रिजल्ट हर 2 साल के बाद नए दोस्त, नए फ्रेंड, नए एटमॉस्फेयर. तो विद दैट it didn't make any difference to them to adjust themselves wherever they had gone. ऐसा कोई एक इंस्टेंस बताइए जहाँ पर बच्चों ने शैतानी की हो, कोई ऐसी कोई शैतानी तो खास, बहुत दोनों ने थी. मिलके, जैसे कहते हैं ना, दोनों मिलके जो प्लानिंग से शैतानी करते हैं। प्लानिंग से शैतानी में सिंस 4 साल का फर्क था. अनुज वॉज वेरी मेच्योर ओके, एज ए चाइल्ड ओनली, एंड एकता थोड़ी चुलबुली थी. अनुज वॉज मैच्योर. तो ऐसी कोई शरारत नहीं थी कि दोनों ने मिलके करते, बट अपनी अपनी जगह पे दोनों ने खूब शरारतें की हुई हैं. और कई शरारतें ऐसी हैं जो कि कहते हैं ना, भूले नहीं भूलती हैं. जी, तो शरारतें तो बहुत की हैं बच्चों ने. इनफैक्ट अनुज को तो सारे बोलते थे
ये राणा सांगा है, इसके बॉडी में 100 चोटों के निशान होंगे. So they used to say that he is a राणा सांगा. खेलते खेलते कभी यहाँ चोट लग गई, कभी यहाँ चोट लग गई. He was very playful, but at the same time very matured. एंड एकता और दोनों ने मिलके कभी ऐसी शैतानी या ऐसा मुझे तंग नहीं करा कि जी. मुझे लगा कि वो हो मैं अब कैसे संभालूं इनको. They were very disciplined children, very disciplined children, and whatever been taught to them, they used to be very obedient. पढ़ाई में भी अच्छे थे, तो इसी वजह से उनकी शरारतें भी मुझे अच्छी लगती थी. And you were working all throughout. You were I teaching. was working. Yes, I was working, and but I never give them an opportunity कि मेरे working होने से उनको कुछ फर्क पड़े. I remember Ekta was in just class 1. We were at Jhansi and we moved in January to Bombay. And वहाँ जाके no school was ready to take her because it was the last month of the session. The final exams were going on. Yes. I didn't want that she loses her ear. Met all that school teachers, सबसे मिले. So much so that even army school was not ready कि नहीं हम इसको नए सेशन के बाद लेंगे. तो I said no, मैं इसका साल नहीं बर्बाद करना चाहती. So then I said कि okay, you give me the syllabus, I will prepare her. In case if she does well, you promise that you will give her jump. Okay. And if she won't be able to do, ठीक है, I will try next year, no problem. So within 15 days to 20 days, me and Ekta, we prepared. I really कभी फुसला के, कभी डांट के, रात रात को 1:30 बजे तक, 2-2 बजे तक इसको बिठा के, बेचारी को जैसे कॉलेज का कोई बड़ा हाँ. टफ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है. And she got through and she got a jump. So that way she saved her 1 year and she did very well. So I was very happy. And actually all the time, फौज में हस्बैंड्स की जो कंट्रीब्यूशन होती है बच्चों के लिए, उनको बहुत कम मौके मिलते हैं. जी. इसलिए पापा बिकम ऑलवेज द डार्लिंग एंड मम्मी बिकम द हिटलर. मम्मी Hitler. तो गधी है, मम्मी तो डांटती है. तो दो आई वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट मम्मा, बिकॉज पढ़ाई के टाइम पे नो कंपनसेशन, नो अदर थिंग्स. पढ़ना है तो पढ़ना है. आई रिमेम्बर Anuj was in class 12th and he used to go for his competitive exams, to prepare preparation. Hmm. तो एक दो बार इसकी टीचर ने मेरे को कंप्लेन करा कि आज आपका बच्चा नहीं आया. द टीचर वाज वेरी डेडिकेटेड. मतलब नहीं तो टीचर्स को क्या परवाह है कि नहीं आया बच्चा तो ठीक है. तो व्हेन ही केम होम, मैं क्या भाई साहब आज किधर गए थे? मम्मा क्लास में गया था. मैं क्या क्लास में गए थे? हाँ क्लास में गया था. Hmm. मैं वहाँ बैठी थी, मुझे तो आप कहीं नहीं दिखाई दिए. आप कब आए थे? मैं क्या हाँ मैं आई थी. तो इसको लगा कि ये तो कोई गड़बड़ है. तो मैं क्या यस योर टीचर हैज कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी. सो ही सेज नहीं नहीं मम्मा वो फलाने बच्चे के बर्थडे था, उसने बोला चलो बर्गर खाने चलते हैं, ये करते हैं. देन आई टोल्ड हिम नथिंग डूइंग. बर्गर हो या शरगर, बर्थडे हो या कुछ, आप पढ़ाई के टाइम पे कहीं नहीं जाओगे. एंड दैट टाइम नरिंदर वाज इन तेजपुर. So again, I Okay. was all by myself with the children. And that day onward, he took it really very seriously and started, putting his all efforts for his competitive exam and did very well. So that way, touchwood, बच्चों के साथ पढ़ाई के मामले में ज़्यादा मुझे वो नहीं करना पड़ा. दे डिड वेरी वेल. और उनको आज मैं देख रही हूँ जो उन्होंने किया अच्छा. I see that they are doing so well. I'm very happy that both of them, they are masters in their field. They're doing very well. I'm very satisfied. Absolutely. It must have been difficult at times to be a single mom while your husband was away on postings. Yes, it used to be. So, what kind of Uh, support system did you have in those days? Because you were working as well. So, how did you manage the timelines? How did you uh, manage the whole? when you are at the place where you are posted, there is no support system because you are Yeah. all family members. They are away at their respective places. So everything, I don't know. कहते हैं ना जब भगवान सिर पे डाल देता है तो हिम्मत अपने आप ही आ जाती है. जी. तो बच्चे बड़े कोऑपरेटिव थे. They were
very loving and very obedient, disciplined children थे, तो उनके साथ मुझे इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आई नहीं. They didn't give me much of headache or anything कि ओह दुखी हो गई हूँ मैं, आने दो फिक्र तुम्हारे नहीं। पापा को, जी। बोलूँगी हाँ, मैं, ऐसी कोई हाँ। नौबत नहीं आई. टच वुड. तो हम थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपकी और मेरी बातचीत में मैं इतना डूब गई हूँ कि मैं पुराने कमेंट्स पढ़ना भूल गई पहले के। तो हम जॉइंट फैमिली की जब बात कर रहे थे, तो रमा सरीन जी बोल रही हैं दैट जॉइंट फैमिली इज आवर कल्चर एंड बेस ऑफ लव, sacrifice and understanding, and it's outstanding that you belong to a joint family. मुकेश भटनागर जी कह रहे हैं इट्स अ लग्जरी टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली नाउ डेज एंड इन टाइम्स टू कम। कहीं मिलते नहीं अभी आजकल ना। और एकता कह रही है माय मम्मी स्ट्रॉन्गेस्ट। और उसके बाद में अनीता मिश्रा कह रही है जब आपने कहा था कि वैष्णव देवी से आपने मांगा था कि माता रानी मुझे बेटी दे, तो अनीता मिश्रा कह रही हैं कि शी गॉट गूज बम्स व्हेन शी हर्ड दिस बिकॉज शी हैड आल्सो द फीलिंग that she should have a first child should be a daughter and her wish was fulfilled by Mata Rani. उमंग सरीन जी कह रही हैं दैट शी फाइंड्स दिस सो इंटरेस्टिंग कि वो एक क्लास ले रही है, उसके बावजूद उन्होंने बच्चों को टेस्ट दे दिया और हमारा ये सेशन या शो सुन रही हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अनीता मिश्रा कह रही है मैम यू आर ब्लेस्ड विद डायमंड्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड कनिका वर्मा है, वो कह रही है ऑसम मधुमासी, शी इज योर नीस आई बिलीव। हाँ। Yes. तो बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और काफ़ी सारे कमेंट्स पीछे चले गए, मैं नहीं पढ़ पाई, सॉरी। और तो जब आपके बच्चों की पढ़ाई भी हो गई और उसके बाद में आपकी लाइफ में एक थोड़ा ट्रेजिक टर्न आया जब आपके हस्बैंड बीमार पड़े। Yes, it has come. Both the children, my daughter was in Bombay and Anuj was at Hong Kong, and the life was going very smooth, very well. Just one day morning, a bad news came, and पता चला कि he's become unconscious, and immediately spoke to Anuj, spoke to Ekta. Ekta came back by evening, Anuj came by next day, late night, sorry. So both children, they were with me. Immediately they joined me. And in fact, when he got that attack, I never knew the impact of that attack. I thought 10-15 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे, आ जाएंगे वापस. मुझे जी। नहीं पता था कि उसका what will be the impact of that attack which he had. तो मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया. उनका ठीक है 10-15 दिन ठीक हो जाएंगे. एंड ही वॉज अ वेरी बैड पेशेंट. तो मैंने कहा अच्छा हो गया हॉस्पिटल में ही एडमिट है, वहीं पे ठीक होके आराम से घर आएंगे तो मेरी तो हाई तौबा हो जाएगी. बट चिल्ड्रन दे न्यू इट एंड आई यूज्ड टू सी देम डूइंग खुसर खुसर कुछ करते थे. मैं आती थी तो ये लोग चुप कर जाते थे. देन स्लोली धीरे धीरे मुझे कुछ I started smelling that there's something very serious, and started talking to doctor. Doctors ने थोड़ा मुझे prepare करना शुरू कर दिया. Then I realized ये तो this is something very big. It has happened to him, and I do not know whether it was his karma और किसी और के कर्म उन्होंने अपने कंधे पे ले लिए. तो it was a disaster. And 3 months he stayed in the hospital and came back on 5th December. He was discharged. That was the actually story when it started because hospital mein to all the staff they were looking after him. But actually the tough time started when he was discharged from the hospital. So initial period about week 10 days, the teething period was difficult. But my support system was very good. All those my cousins with whom we were born and brought up together in Batinda, by chance they are all in Delhi. So just of one of my phone call, they used to be with me. So seeing that support, and one of my cousin, he's a doctor. One day he just came and told me in Punjabi, "Pehna, जो करना है तू ही करना है."
सब लोग होंगे तेरे नाल, बट जो करना है वो तू ही करना है। आई मतलब उसकी उस बात में मुझे इतना वजन नजर आया। दैट डे आई जस्ट थॉट कि मैं किसी को तंग नहीं करूंगी। स्पेशली मेरे बच्चों का उस टाइम बहुत चैलेंजिंग टाइम था, दे वर टुवर्ड्स देयर करियर। आई नेवर वांटेड कि मैं उनको परेशान करूं, बट स्टिल both brother sister, they spoke to each other. It was little difficult for Anush to shift from Hong Kong, so Ekta managed and she shifted from Bombay to Noida with me. So that was a very big support to me when she joined me. And another thing that I, they say कि एक बहुत बड़ी बात हुई जिसके साथ कि इतनी बड़ी सेटबैक आ गया घर में, बट उसके बाद उस सेटबैक को सहने के लिए मुझे इतनी झोली भर भर के हेल्प मिली दैट माय झोली यूज्ड टू बी ओवरफ्लो। Wow. आई यूज्ड टू थिंक मुझे ये चाहिए, एंड इट यूज्ड टू बी विद मी, whether it was a help, whether it was a medicine, whether it was a person, name a thing. Because before that I started Buddhism, I started doing the prayers, and my prayers, they really helped me. They gave me courage, they gave me wisdom, they make me, they made me very strong. And then I thought it's me and me. My husband, from husband he became my baby. So I set his routine like a small born baby कि अब इनको नहलाना है, अब इनकी फीड का टाइम है, अब इनको ये करना है. So it was like a routine of a baby. And anybody used to come to my house, they never felt कि घर में कोई इतना बीमार आदमी है जो कि टोटली किसी दूसरे के हाथ में है, Dependent. दूसरे के जी. बस में है, कुछ कर नहीं सकता. बिकॉज मैंने पूरे 7 साल कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात, किसी का दुख, किसी का सुख नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं नहीं गई, यही सोचते हुए कि यस, आई हैव टू बी विद एवरीवन बिकॉज एवरीवन इज विद मी. Wonderful. Wonderful. सो दैट जर्नी, though it was very tough, but I think बहुत हंसते हंसते गई. I kept him like a king. He used to be in the bathroom. He used to say that I will finish my 3S: shit, shave, shower. Sure. So Yes. I continued his routine. I didn't change his routine at all, though he became my baby. But whatever routine he had, I made that. I used to do the shave. I used to do his cutting. I used to do make him some. कभी अमिताभ बच्चन जैसी beard रख देती थी, कभी कुछ, कभी कुछ. I used to talk to him because doctor told me कि जितना आप इनके साथ बात करोगे उतना ही अच्छा है. It will, you know, good for him. So I used to talk all funny things. I used to do all funny things to him. कभी कैसे कंघी कर देनी, कभी कैसे कंघी कर देनी. And at times he used to respond also. कभी कभी मे बी इट वॉज माई पॉजिटिव एटीट्यूड, तो मुझे लगता था कि जो मैं कुछ कर रही हूँ इनको समझ आ रही है और ये उसका जवाब भी दे रहे हैं अपनी आंखें पलट पलट के. बट 7 years went off very well, with all the support. My army people, they had helped me a lot. The boys who had come to look after him, till today I am connected to them. They call me so much so that every, there's one boy, he has constructed his house. उसने एक कमरा मेरे नाम के लिए रखा है कि आपने जब छुट्टी आना ना मेरे घर में आके रहना है. आप अनुज के पास जाते हो, दीदी के पास जाते हो और मेरे घर में भी आके रहेंगे. So बहुत that बढ़िया kind of बात. bonding I have with those boys who looked after Narinder 7 years. So I am really, really thankful wherever they are. Whosoever has extended their helping hand, मैं उनका देना ही नहीं दे सकती हूँ, दे ही नहीं सकती हूँ. So whatever little opportunity I get, I feel I must contribute. I must pay my, gratitude in form of what help I can give to each and every person who helped me or who were at my side at that time. Learned a lot. 7 years had made me
very matured. Otherwise, I was very easygoing person. I used to fight with my children like their friends. उनके साथ लड़ाई भी वैसे करना, बड़ी होने की बड़ी के टाइम बड़ी भी बन जाना. But those 7 years had made me very mature, learned a different life, but never cribbed. I never cribbed. So that Never. is how my journey became very easy with him. 7 years on the bed without uttering a word, I started understanding him. And a day came, then God said, I think enough he had gone through. He should now come back. So he had gone, but I had just one regret. He should have seen it as marriage. That is the only regret I have, that I wish he was very Yes. attached to her, though attached to both of them. Anuj and me both were we both in one team, and Ekta and Narinder were in one team. It So always we were, happens. yeah. Daughters are So always daddy's girls, तो वो होता ही है, टीम uh, हमेशा माँ बेटे की और बाप बेटी की बनती है. जब yes, आप ये then सारे 7 साल जब आप स्ट्रगल कर रही थी, तो नेचुरल है कि बच्चे आपका सपोर्ट बने थे, इमोशनल सपोर्ट थे, दे वर देयर इन एवरी विच वे इज पॉसिबल. लेकिन यू बीइंग द मॉम, आखिरकार आप उनकी मदर थी, were you able to give them the emotional support that they needed at that time because their father was unwell? yes, I told them now I am Mapa, not Mama. I am Mapa. So whatever, you know, the best I'll be able to do as a ma or a pa, I will try my best, and I think I did. I don't think that any function, any opportunity, because Narinder had seen my son's wedding. Though no, my grandchildren were born after him. He was not in his senses. Maybe it is a good Barai. Maybe it is, though another regret that I was never able to be at my daughter in law's side when she was expecting and given birth to their children. So her own mother was there. So एक माँ तो लो, I was very happy that one mom was there. But Yes. वो एक मेरे मन में बड़ी इच्छा रह गई that I was not with her. But वो पूरी कमी मेरी एकता ने कर दी. So एकता's delivery time, her, all the time I was with her from day one till सवा महीना, and वो कमी भी इसी जन्म में मैंने पूरी कर ली. तो एक बेटी ने नहीं कराई तो दूसरी बेटी ने वो दूसरी कमी भी लेकर पूरी आई, कर दी. बिल्कुल. भगवान जब है ना जस्टिस पूरा करते हैं, ईश्वर, और जो आपकी स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको आगे लेके जाती है. आपने जब आर्मी लाइफ छोड़ी, 7 साल आपने स्ट्रगल किया, फिर आपने दोबारा कैसे लाइफ की डोरी को समेटा जब आपने सोचा कि मुझे वापस से पढ़ाना है? नहीं, पहले तो मैंने आई टोल्ड एवरीवन कि मुझे कोई बेचारा नहीं कहेगा. जी. आई डोंट लाइक लिसनिंग दिस वर्ड बेचारी. I don't want to become Bichara. Though initially 1 year it was little, difficult. या. Children never showed their emotions to me. I never showed my emotion to the children. एक दूसरे के सामने हम हमेशा हंसते ही रहे. I at time used to be, because मैं बहुत सेंसिटिव हूँ. तो वो साल थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहा, बट एक दूसरे को इमोशनली हमने एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहा, और ना ही उनकी इमोशन को टच करना चाहा. बिकॉज इमोशंस तो आएंगे ना, एक बच्चे के अपने इमोशंस होंगे, एक वाइफ के अपने होंगे. इमोशंस तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो या. तो आएंगे ही. बट उन इमोशन से हमने किसी को वीक नहीं होने दिया. My daughter was strong at her place, my son was strong at his own place, I was strong at my place. I told them, मेरे को जितना मेरा एक्सपोजर है, मेरा उतना, जितना आपका है उतना आपका, बच्चों का, ऑल चिल्ड्रन, अनुज, स्तुति, एकता. Whenever a time comes that we have to take a decision, we have to take a decision the best.
विदाउट रियलाइजिंग या क्रिबिंग कि मेरी बात नहीं मानी या उसकी बात नहीं मानी. जहाँ एक्सपीरियंस का सवाल होगा, आई विल बी मोर एक्सपीरियंस, लिसन Absolutely. मी, बट एक्सपोजर आप लोगों का है दोनों का. आई विल लिसन टू यू एंड विल टेक आउट द बेस्ट आउट ऑफ इट. तो Such a जो beautiful बेस्ट thing सबके to लिए say. रहेगा, वी विल टेक दैट डिसीजन. ये सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी यहाँ पर, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो हमारी ही बात मानी जानी चाहिए। यहाँ आप कहती हैं कि एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा है लेकिन बच्चों एक्सपोजर आपका ज़्यादा है। तो उस एक्सपीरियंस और एक्सपोजर को मिलाकर जो बेस्ट निकलेगा उसको आप चूज़ करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और यहीं पर दो पीढ़ियों के बीच की खाई को पाटा जा सकता है। अदरवाइज जो जनरेशन गैप जो होती है वो बनी ही रहती है और डिफरेंसेस बढ़ते ही चले जाते हैं। This is a very very nice thing to say, and Monica कह रही है कि if we can imbibe even one of your qualities, Madhu aunty, we would become a better version of self. और वाकई में ये हर पेरेंट नहीं समझता इस चीज को जो आप बात कर रही हैं। आपने पढ़ाना कब स्टार्ट किया दोबारा? क्योंकि जब आप रिटायरमेंट के बाद आपका आर्मी स्कूल में तो पढ़ाना बंद हो गया। दोबारा जब रिटायर्ड हो गए, आई जॉइन समरविल स्कूल. ओके। And Narinder used to be at home. And whenever I used to come back from school, he used to welcome me the way I used to do when he was in service. सो खाना स्वीट। त्यार, खाना त्यार, नींबू पानी त्यार. Like that, he used to welcome me when I used to come back from school. But मुझे एक जगह पे, after some time, I felt his loneliness. Because I used to go in the morning 8 o'clock and come back by 3:30, 4 o'clock. I felt that uh, that he's feeling very lonely. So I left the job. ओके। I said मैं नहीं जाऊंगी school. Then I made my own group at home, tutorials, हम्म। and I had about 12, 15 children. I started at home. In fact, I started earning much better than what I was getting from the school. And I became the Absolutely. master. I became the everything on my own. So there was no under any compulsion that I was to work. And all those children to whom I have taught, they are still connected with me. They're doing very well. They themselves have become parents. They keep talking to me on the phone. Somebody's in America, somebody's in England, some children are here. So whenever I meet them, मुझे लगता है अरे कल की तो बात थी, तुम छोटे 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 मेरे पास पढ़ने आते थे. तो आई हैड देन नरिंदर स्टार्टेड हेल्पिंग मी बिकॉज क्लास फोर्थ फिफ्थ मैथ्स मेरे को नहीं करवाना आता था. देन नरिंदर स्टार्टेड टीचिंग देम मैथ्स एंड साइंस. So we both started helping to the children, and that time it was a proper tutorial, tuition bureau kind. We both started doing together, and after that he got his job. So again I started managing. जो भी Saturday Sunday मिलता था, तो he used to teach those children science and math. He used to help me. So once this his sickness came, then I left it for some time. Yeah. But then again, Anuj and Ekta, they said, you continue your routine. Yes, I said, yes, definitely I will continue my routine. I started then fabrication. I had a tailor with me, very good person. He comes home, pick up that stuff and carry, then make it ready and bring it home, deliver. I need not to go anywhere. Only thing I design and give him the material and he Okay. makes. So then started doing multiple things. Though my husband, he was never in favor कि मैं ऐसे कुछ काम करूं. And it was my mother-in-law, those days, who told him that if she has some talent, why you stop her? Let her do. उसमें कोई बुरी बात नहीं है. नहीं मम्मा, दूसरे लोग क्या कहेंगे? She says, क्या कहेंगे? उसकी अपनी मेहनत है, उसका अपना हुनर है. अगर वो करती है तो उसको करने दो. So my mother-in-law, in fact, she encouraged me. And after that, he never said no for anything. I have I have done as a beautician. I worked as a beautician.
I worked as a teacher, I worked as a art and craft teacher, I worked as a class teacher, then at home, bureau, then fabricator. So wherever got the opportunity, I grabbed that opportunity, and I love to do such things. Even now also, anything comes, I feel कि अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ है. Wherever I get chance, लगता है कि सीख लेना चाहिए. नहीं, मैंने आपका बहुत सामान देखा है जो आपने यूज्ड साड़ियों से बेड कवर्स बनाए हैं, टेबल मैट्स बनाए हैं, बहुत सारा काम आपका मैंने देखा है, वो बहुत खूबसूरत है। और अपने आप को बिजी रखने के लिए इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग दैट आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, कि मैं क्या करूं, मेरी किस्मत खराब है, और आप अपने टाइम को इतना कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रही हैं। आपने हम्बल बैकग्राउंड से बच्चों को कब से पढ़ाना स्टार्ट किया? In fact, my driver family, who's staying in my outhouse, the child was born in my hand only. हम्म। And then when they started going to school, so I thought now this child, I will take the responsibility. So I started teaching him. With that, one, two, three, four, five. So a time came, I had about 10 to 12 children from humble background. Started teaching them. आई थॉट उस टाइम पे काफ़ी कमा लिया था, अब कुछ अच्छा काम भी कर लेना चाहिए. सो स्टार्टेड टीचिंग देम एंड इट वाज अ गुड नंबर, और मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया उनको पढ़ाने के लिए. आई नेवर फेल्ट कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ या मुझे क्या मिलेगा. वो जब अच्छे नंबर लेके आते हैं लगता है कि मैं पास होके आ गई हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगा, उनसे भी ज़्यादा मैं एक्साइटेड होती हूँ जब वो अपना रिजल्ट लेके आते हैं. दादी आई गॉट 10 out of 10, आई गॉट 9 out of 10. तो आई फील कि ये मुझे नंबर मिले हैं, उन्हें नहीं मिले बिल्कुल हैं. बिल्कुल एंड बिल्कुल। टच वुड दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल. एंड I would फील also दैट माय want you to tell our viewers about how you managed to teach them during the lockdown days. That's a very, very interesting thing. see lockdown, I was just one day sitting कि मैंने इतनी मेहनत इन बच्चों के साथ की है. नाउ लॉकडाउन में ये तो सब भूल जाएंगे, बिकॉज छोटे बच्चे हैं. 4 दिन आप उनको नहीं पढ़ाओ, दे बिकम फ्लैट, सब भूल जाते हैं. तो वन डे जस्ट केम टू माई माइंड कि क्यों ना मैं इनको बैल्कनी में बैठ के पढ़ाऊं. And I just thought that I'll have a trial class. So I spoke to all the parents and told them कि this is what I'm thinking, and they said कि शुक्र है आपने ये बात कही, हम तो कब से सोच रहे हैं कि क्या कैसे इनको पढ़ाने के लिए आपको बोले, कैसे करें. तो I said कि अपनी अपनी सब कुर्सी मेज लेके आएंगे. And they started bringing their own table chair and sit on the ground. हमारी balcony के नीचे जगह है गैराज के सामने. And I too used to sit in the balcony. I put a blackboard, made a proper classroom, and it went so well, Ella. I can't tell you that the TV people came. They made a TV. It came into the TV also, and one of the magazine also. They came to capture our way of teaching. So it was really, it went off very well. So all those lockdown time, I taught them from the balcony, and they didn't miss anything. They were regularly doing all their, more than the school they were working. जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा आपके अंदर है, भरपूर है। और आपकी सिस्टर नीता मगो कह रही है, माय सिस्टर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गुड गोइंग। And I'm Thank so you, happy sir. to see we've got so many viewers today who are watching our show, और बहुत सारी इंस्पिरेशन लोग आपसे ड्रॉ कर रहे हैं। चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगी मदर्स को? मदर्स को मैसेज देने से पहले जी। मैंने एक अपने परिवार के लिए एक छोटी सी कोशिश की है, जी। 4 कुछ लाइनें लिखने की. अरे वाह! मदरहुड क्लब तो हमेशा स्वागत करता है कि अपना लिखा कुछ सुनाएँ आप हमको। बिल्कुल, बिल्कुल। प्लीज हंसना मत, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बन नहीं, पाया. नहीं, नहीं, आप सुनाइए प्लीज़। मेरा छोटा सा परिवार यूं बने रहे, यूं बना रहे, ऐसे ही चलता रहे. मेरा छोटा सा परिवार, बरसें खुशियां, खुशियों की बहार, बरसें खुशियों की बहार.
यही है आरज़ू, सबको एक साथ रखना। हे प्रभु, अपनी यह कृपा तुम सदा बनाए रखना। चाँद जैसे मेरे बेटे, चाँद जैसे मेरे बेटे, विनीत, अनुज, अंजने, प्यारी सी बेटियाँ, स्तुति, एकता, अनाया, वान्या, प्यारी सी मेरी बेटियाँ, यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना। प्रभु अपनी कृपा इन पर यूं ही बनाए रखना। कोई मुसीबत आए, सब मिलकर लड़ें। कोई मुसीबत आए, यह सब मिलकर लड़ें। कोई मुसीबत आए, सब मिलकर हर लें। सुख दुख बांट लेंगे हर एक पल में। यही आरजू है सब एक साथ रहना। हे प्रभु, ये कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखना। थैंक यू। ये तो प्रभु ने आपकी सुनी हुई है ऑलरेडी, क्योंकि बच्चे, मैं जैसे बात करती हूँ जब एकता से, तो आई कैन सी दैट हर कनेक्ट नॉट ओनली विद हर ब्रदर, हर सिस्टर इन लॉ, हर कनेक्ट विद हर कजन्स, Yes, her husband's we cousins, are we are husband's very family. close with Yes, family. yes. My sisters, my cousin sisters, you know, कुछ भी बात होती है तो हमारे ब्रदर इन लॉज कहते हैं जहाँ ये सब इकट्ठी हो जाती हैं तो बस हिड़ 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 ही सुनाई देता है। पता नहीं ये क्या बातें करती हैं, और हंसी के फुवारे दूर तक सुनाई देते हैं। तो वी ऑल रियली एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। और हमारे में क्या मासी है, क्या भांजी है, वी आर ऑल सेम। 10-10, 15-15 सालों का फर्क है, बट लगता है कि वी ऑल आर फ्रेंड्स। So we are very close knit family and very good bonding with each other. दूर रहते हुए भी we always feel कि we are very close to each other. चाहे महीना महीना बात नहीं हो, तो जिस दिन बात करते हैं तो लगता है कि बीच में महीना तो आया ही नहीं था, अभी कल ही तो बात की थी। तो we Beautiful. have very good bonding, very strong bondings. That bonding should remain intact. I can only pray to God. And चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, बिकॉज जैसा आपने कहा कि जिंदगी है तो स्ट्रगल्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, और मदर्स एज मदर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब कोई चैलेंज आता है तो अपने आप को संभालना, अपनी फैमिली को संभालना, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Always be a helping hand wherever. At that time, forget all the grudges and be a support no matter what situation. And जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बस हर फिक्र को ब्यूटीफुल। धुएं में उड़ाते जाओ। देखिए दर्शकों, व्यूअर्स, वी हैव हैड एक लार्जर देन लाइफ इमेज है ये। शी इज अ गो गेटर, शी इज एन अचीवर, एंड शी थिंक्स अबाउट एवरी वन अराउंड हर. So we should aspire to be someone like Mrs. Madhu Sehgal. And I would like to wind up today's session by thanking Mrs. Madhu Sehgal for her sharing a beautiful journey, for sharing so much wisdom and happiness with us at Motherhood Club. Motherhood थैंक यू Club, इला, थैंक यू सो Motherhood Club, मच। जी. आई डोंट नो मैं किस लहजे में क्या क्या बोल गई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, बट आप आई डोंट आप नो। दोबारा जाके सुन जस्ट सकती हैं इसको यूट्यूब पे, आज के सेशन को आप सुन सकती हैं यूट्यूब पर, और आपको पता पड़ेगा कि आप खुद ही कहेंगी, अरे ये क्वालिटीज मेरे अंदर हैं इतनी सारी. जी. इला आवाज नहीं आ रही। मुझे आ रही है आपकी आवाज. हेलो। आपका म्यूट. हेलो, मुझे आपकी आवाज आंटी आ रही है. ओके। यस. मैं वाइंड अप कर रही हूँ वैसे अब. ओके। तो a big थैंक thanks यू to Mrs. एवरीवन। Madhu Sehgal, and thank you everyone for joining. Thank you for showering so much of love and your participation during the show today. And we wish we have more and more women like Mrs. Madhu Sehgal to show us the way. Because without such amazing people around us, we would be lost. इतना एक्सपीरियंस आज उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, इतना विजडम शेयर किया है, इसके लिए एक बार फिर से बहुत 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 थैंक यू मिसेस मधु सहगल आपका. और सारे व्यूअर्स आपका भी बहुत बड़ा धन्यवाद. ऐसे ही जुड़े रहिए,
और प्लीज 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 अभी भी मास्क लगा के रहिए, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। एंड वी विल मीट यू वेरी सून विद सम other inspiring mom, some other inspiring story. Thank you so much for joining. Good night. Bye. Thank you so much. Thank you, Bye Ella. bye. Thank you, Bye. everyone.